Good morning, dear students. So, in the last two previous classes, we have started the second chapter of our computer book, that is Advanced Features of Excel. In that, you have already learned about the components of the chart, that are the chart area, chart axis, value axis, data series, category name, plot area, legends, chart title, and grid lines. After that, we have learned about the bar chart, column chart, line chart, area chart, scatter chart, then pie chart. All these are the main type of chart that we are using in our daily life when we want to show anything, any data by pictorial representation. So chart plays a very important role when you are showing anything with the pictorial representation. And in the last class, that means the last week class, we have learned how to create the chart in the Excel. So in that I showed you practically also how to make the chart in the computer and how to use your data for making the different type of the chart. So first of all, you have to take or insert the data in the computer in MS Excel. Then with the help of data, we made this type of bar chart with the help of the MS Excel chart option. After that, we learned how to format a chart. Formatting means you can change the title, text, font, line color, weight, border style and legends according to your convenience. That means, let me explain in Hindi. आप आपके चार्ट को जिस तरह से डिस्प्ले अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, जिस तरह का डिस्प्ले चाहते हो, ये आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मेटिंग ऑप्शन ऑफ द चार्ट. इन दैट सीक्वेंस वी हैव लर्न हाउ टू इंसर्ट द चार्ट टाइटल. चार्ट का टाइटल यानी कि चार्ट का नाम हम कैसे दे सकते हैं. फॉर दैट यू हैव टू गो टू द चार्ट टाइटल, देन लेबल्स, देन गो टू द लेआउट option of that, and there you will get the option chart title. वहाँ पे आपको चार्ट टाइटल नाम का एक ऑप्शन मिलेगा जिस पे आप क्लिक करोगे और उसको ओपन होने के बाद यू कैन राइट योर द नेम ऑफ एनी नेम टू योर चार्ट. So up to this heading we have learned in the last week class. Now today we will start how to format the axis. Axis means the x-axis and y-axis that I have already shown you while we were making the chart. So according to your requirement or your convenience, you can change the axis. For that you have to click on the format axis option, and here you will get different type of different type of option. So you can change the value. Some default values are given here, so according to your convenience you can change this value, and you can format the axis. That means on x-axis you can take the different value and different that means difference of the number, how much number you want. That means the difference of how much number. For example, you started from the 0, then after that you want the difference of 20, so next number will be 20, then another number will be 40, 60, 80 and 100. That means the difference of 20 will be in that axis. Our next topic is formatting legends. So
first of all, you should know what are legends. These legends, about the legends I have already told when I was explaining about the components of the chart. But let me explain once again in Hindi so that you can understand it very easily. Legends जो होता है, लीजेंड्स अलग अलग टाइप के जो आप ग्राफ बना रहे हो और उसमें अलग अलग बार जो रिप्रेजेंट करते हो, तो जो अलग अलग बार अलग अलग डिफरेंट स्टूडेंट्स और उसका डाटा रिप्रेजेंट करती है, तो उनको शो करने के लिए एक बॉक्स रहता है जिससे हम पहचान सकते हैं कि रेड कलर का बॉक्स जैसे राम का है, ब्लू कलर का बॉक्स श्याम का है, ग्रीन कलर का बॉक्स राजू का है। तो इस टाइप के अलग अलग एक वो रहते हैं कलर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन और डॉटेड लाइंस। लाइक दिस यू कैन टेक द डिफरेंट लीजेंड्स टू एक्सप्लेन योर चार्ट, and you can give the color also, border style also. In the legend box you can go and select the different options. Here you can see first width is there, then dash type, then join number, arrow setting, different type of lines are there. You can select any type of lines from this given line to show your. So dear students, see the example of the legends. Here in this area chart you can see on the y-axis the numbers are there, the difference of 50 is there, and on the x-axis the names of a student are there. And here on the right hand side corner one green box is showing the total, red box is showing the Hindi marks, blue box is showing the English marks. So when you see the green part, that means it represents the total Hindi and English, and here the red lines, the red portion of this chart represent the Hindi portion, and this blue portion of the chart represent the English portion. So these blue, green and red are the known. This blue shows the total, red shows the Hindi, and blue shows the English. These are called the legend. Now see in one more different graph, that is the pie chart. Here you can see 6 different colors are there, and the blue color shows the Anju, red color shows the Manju, green color shows the Ranjana, light blue color shows the Kirti, and blue color shows the Hemant. So these colors and the names on the right hand side are known as the legends of that graph. After that, the next topic is formatting data series. So first of all you should know what are the data series. So data series means the bar color. आपने जो ग्राफ बनाया है उस बार का कलर, उसकी लाइंस, उसके जो अलग अलग स्लाइस है, टुकड़े हैं, और शिफ्टिंग देयर पोजीशन, उनको इधर से उधर जो शिफ्ट कर सकते हो, ऑल दिस आर नोन एज द फॉर्मेटिंग डाटा सीरीज. तो ये आप कैसे कर सकते हो? फॉर दैट you have to click a right mouse button on your chart. Here when you click the right mouse button you will get one option, format data series. When you click this format data series, one dialog box appears. See the different options of this dialog box. So many different options are there. On the left hand side you will see the border color, border style, shadow, glow and soft edges, 3D format, fill color, and on this
next column also you will get the so many options. When you open this in the Excel, MS Excel, you will get all this option. So all this thing I will show when I will show you the practical on the computer. After that, the most important part of this chart making is sorting and filtering data. So what is sorting and what is filtering? You must know the difference between sorting and the filtering. So sorting means arranging your data in ascending order or descending order. That means आप छोटे से लेकर बड़े तक या बड़े से लेकर छोटे तक डाटा को अरेंज कर सकते हो एक्सेल की हेल्प से, उसे सॉर्टिंग कहा जाता है. फिल्टरिंग मीन्स for analysis of data you need to see or hide the different records which is of no use. That means आपको कुछ रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप देखना चाहते हो कि एक क्लास में कितने बच्चे फर्स्ट डिवीज़न में हैं, फॉर दैट यू वांट टू सी ओनली द नंबर एंड द नेम्स ऑफ ऑल द फर्स्ट डिवीज़न स्टूडेंट्स. सो यू कैन फिल्टर the data with the help of this filter command according to your requirement. when you click there, आपको सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न वाले बच्चों के ही नाम दिखेंगे, बाकी सेकंड थर्ड डिवीज़न फेल और सप्लीमेंट्री वालों के नाम वहाँ से टेम्पररी डिलीट हो जाएंगे या डिस्प्ले नहीं होंगे आपके सामने. सिमिलरली when you want to see all the supplementary holders record, when you click दैट ऑप्शन, तो आप जब उस पर क्लिक करोगे तो सिर्फ जो बच्चों को सप्लीमेंट्री आई है वो ही रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे. बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न में जो पास हुए या जो टोटल फेल हो गए हैं वो वाले रिकॉर्ड्स टेम्परेरीली डिस्प्ले नहीं होंगे. ये रिकॉर्ड्स का वापस भी ला सकते हो बाय शो ऑल रिकॉर्ड्स कमांड से. तो you must understand the difference between the sorting and the filtering. Let me revise once again. Sorting में आप आपके डाटा को सिर्फ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हो, लेकिन फिल्टरिंग में आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका डाटा देख सकते हो, है ना. जैसे आपको कोई भी फिल्टर लगाना है, जैसे फर्स्ट डिवीज़न वाला लगाओगे तो फर्स्ट डिवीज़न वाले दिखेंगे, थर्ड डिवीज़न वाला फ़िल्टर लगा दिया तो थर्ड डिवीज़न वाले दिखेंगे. अगर आपको यू वांट टू सी द फेल स्टूडेंट तो आप सिर्फ फेल वालों का डाटा देख सकते हो, बाकी जो पास वाले बच्चे हैं और जो सप्लीमेंट्री वाले बच्चे हैं उनका डाटा टेम्परेरीली डिसेबल हो जाएगा या डिस्प्ले नहीं होगा. सो द फिल्टरिंग डाटा, इट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. आफ्टर दिस वी came to the end of this chapter. So let me recall you or recap you what we have learned in this chapter. So chart is a graphical representation of the data. First thing we have learned in this chapter. So the next thing we have learned is chart area. About the chart area, includes all the area and object in the chart. Plot area is the window within the chart area. It contains the actual chart. Then legends depicts the color, pattern and symbol assigned to the data series. X-axis of the chart category and y-axis are called the value axis. The bar chart display the data in form of long rectangular rods called the bar. Pie chart display the data in form of circle that is divided into series of segments. Sorting means arranging data either in ascending or descending form. The filter features allow you to see only those records that you want to display, while the hides the rest of data temporarily from the view. So all these things we have learned in this chapter. So
that filtering, sorting, and all these different thing what we have learned, that I'll show you with the help of practical also. So the next file or the next video, you will get the practical of all this sorting, filtering and all other options.